All of us wants to be extremely productive and efficient at work. There is no denial to this, right? शायद इसीलिए there are many time management and priority management tools and techniques available so that we can be more efficient at work. मैंने last video में I had talked about a technique called Pomodoro technique. बहुत अच्छा वीडियो है, आप जाके उसको देख सकते हो. In this video, I am going to talk about another interesting technique called Eat the Frog. Yes, you have heard it correct. It's called Eat the Frog technique. Detail में बात करेंगे on the other side of the intro. दोस्तों, जब मैंने मेरी बेटी को बोला कि my next YouTube video is on Eat the Frog, she looked at me and she said, Eat the frog? Do we have to cook the frog and eat it? मैंने बोला नहीं, ये एक टाइम मैनेजमेंट टेक्निक है और बहुत ही यूजफुल टेक्निक है एंड इट रियली गॉट हर इंट्रीग्ड. बहुत ही इंटरेस्टेड हो गई. सो मुझे लगा कि इसके बारे में एक डिटेल वीडियो तो बनता है. सो हियर आई एम टुडे मेकिंग अ वीडियो ऑन द टेक्निक ईट द फ्रॉग. In the last video where I talked about Pomodoro technique, I mentioned that Pomodoro technique is very useful when you want to get into the flow. Along similar lines, Eat the Frog is a technique that is useful when you want to beat procrastination and achieve productivity. Very interesting technique. Let's get to some history. So this technique called Eat the Frog was first coined by Brian Tracy. एक मोटिवेशनल ऑथर हैं, स्पीकर हैं, जिन्होंने ये टाइम मैनेजमेंट टेक्निक डिस्कवर करी थी. दोस्तों, होता क्या है कि व्हेन वी आर bombarded with tasks, so typically the ones which are complex, which are time consuming, which are not much interesting, जिसमें ज़्यादा मोटिवेशन नहीं है, we tend to procrastinate on those tasks. They may be important, they may be urgent, but वो procrastination हम तोड़ नहीं पाते और हम गेट स्टार्टेड नहीं हो पाते. दैट इज वेयर द ईट द फ्रॉग टेक्निक इज एक्सट्रीमली यूजफुल. इस वीडियो में मैं इस टेक्निक को स्मॉल स्टेप्स में ब्रेक कर दूंगा सो दैट इट इज यूजफुल फॉर यू टू अंडरस्टैंड द एसेंस ऑफ द टेक्निक एंड अप्लाई इट टू सिचुएशन वेयर यू आर नॉट फाइंडिंग इनफ मोटिवेशन, आर प्रोक्रेस्टिनेटिंग अबाउट द टास्क, एंड देन यू कैन यूज दिस टेक्निक टू गेट योर डिजायर्ड रिजल्ट्स. स्टेप 1, आइडेंटिफाई द फ्रॉग. इस स्टेप में आपको वो एक्टिविटीज आइडेंटिफाई करनी है और उनको फ्रॉग डेजिग्नेट करना है. दोज दैट कंज्यूम टाइम, दोज दैट आर कॉम्प्लेक्स, जहाँ पे बेसिकली मोटिवेशन नहीं आ रहा है, एंड द टास्क वेयर यू आर प्रोक्रेस्टिनेटिंग. सो आइडेंटिफाई दोज टास्क्स एंड कॉल देम एज फ्रॉग्स. स्टेप 2, प्रायोरिटाइज दीज फ्रॉग्स बेस्ड ऑन अर्जेंसी, बेस्ड ऑन द इम्पैक्ट दैट विल हैव ऑन योर ओवरऑल गोल, बेस्ड ऑन द नीड. जो भी आपकी प्रायोरिटाइजिंग क्राइटेरियाज हैं, आप उनको यूज करें, इवैल्यूएट करें और अपने फ्रॉग्स को प्रायोरिटाइज करें. स्टेप 3, कमिट टू स्टार्टिंग ए फ्रॉग. दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप, क्योंकि यहीं पे प्रोक्रेस्टिनेशन आता है. सो आपने आइडेंटिफाई कर ली क्या फ्रॉग है, आपने प्रायोरिटाइज कर लिया, अब आपको स्टार्ट करना है. तो व्हाट यू नीड टू डू इज टू बीट द प्रोक्रेस्टिनेशन पीस, you need to start working on this frog at the time which is most productive for you. So it could be early morning, it could be, let's say, sometime in the before the noon, or maybe in the evening. Whenever you are most productive, most energized, that's the time to start with the frog. ये जो मोमेंटम आपके अंदर रहता है, यही आपको इस प्रोक्रेस्टिनेशन को ब्रेक करने में काम आता है. What will happen is, when you assign this frog and you start working with your focus, that's when you will start noticing progress. Step 4, you have to eliminate the distractions. It's extremely important. Some of the ways you can do this is put your messenger on DND, put your mobile phone on vibration mode, silent mode, और आप इसको एक dedicated time दें. हो सकता है, पॉसिबल है तो आप उसको एक ब्लॉक टाइम दें और आपके फ्रॉग पे काम करें. Then you will so slowly see progress happening in the particular task. Step 5 is celebrating small successes. Extremely important. Congratulate yourself for
making that first step or making progress with your frog. So you have to celebrate these small successes, these small wins, क्योंकि यही जो है ये आपको मोमेंटम बिल्ड करेंगे. अल्टीमेटली द होल एम ऑफ ईट द फ्रॉग इज टू बीट प्रोक्रेस्टिनेशन एंड स्टार्ट बिकमिंग प्रोडक्टिव. Be able to do the task that you have been procrastinating for a long time because it is complex, it is long, it is time consuming, whatever be it, but आपने वो किया नहीं है. So the whole idea is to celebrate small successes so that you keep the momentum going and complete the task. And last but not the least, step 6, you need to be consistent. See, it is important to be consistent. Otherwise, the results will not come. So, for example, if you are going to the gym, right, you have to be consistent. Otherwise, you will not get the result that you want to achieve by going to the gym. एक बार दो बार जाके आप वो रिजल्ट कभी अचीव नहीं कर पाओगे. सो सिमिलरली, to benefit from eat the frog kind of a technique, you need to be consistently working on that momentum every single day until that task is completed. So I gave you steps to use the technique, right? But what is the benefit if I don't give you an example? So let me give you an example to further illustrate the importance of the technique. Suppose you have got health and fitness goals. तो naturally आपने शायद उसमें जिम जाना भी एक गोल रखा होगा, लेकिन we all know how much we procrastinate to exercise, how much we procrastinate to go to a gym. So what you do is you can use this technique to break this procrastination and be productive. कैसे करेंगे मैं आपको बताता हूँ. सबसे पहले तो आप आइडेंटिफाई कीजिए जिम जाने का जो आपका गोल है. You identify that as your frog. Of course you would have prioritized it because it's a health and fitness goal. Then you have to commit yourself to showing up for the frog or working with the frog. तो इसमें क्या होता है, you have to give your best shot, best time of the day to this frog. So in case of health and fitness, the best time is of course in the morning. So आप morning में मतलब एक प्रण ले लीजिए कि मुझे उठते ही जिम जाना है. So ये आप करो and then you show up in the gym. And then when you work out there, you give undivided attention to the workouts. Enjoy कीजिए प्रोसेस को, वहाँ पे आप उस फ्रॉग पे काम कीजिए और फिर जो छोटे छोटे विन्स हैं उनको भी सेलिब्रेट कीजिए. हो सकता है कि थोड़े रिजल्ट्स आपको क्विकली दिखना चालू हो जाए, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंटली द लास्ट स्टेप, यू हैव टू बी कंसिस्टेंट. यूज द मोमेंटम दैट यू हैव बिल्ट, यूज द स्मॉल सक्सेसेस, यूज द वर्क एंड यूज द मोमेंटम दैट यू हैव गॉट, और आप कंसिस्टेंटली इस गोल पे वर्कआउट करते रहिए एंड देन यू विल सी यू फुलफिल योर जिम गोल्स. So that was an example of how to use the eat the frog technique. So friends, the whole idea of eat the frog technique is to basically break the cycle of procrastination by giving the best possible time or the most productive time to a work which is important to finish, which is important to get started, but आप motivate नहीं हो पा रहे हो. तो इस तरह के situations के लिए Eat the frog is a very good example or a very good technique that you can use to become productive. I hope you liked the video today. मैं ऐसे ही और सारे videos लेके आऊँगा. So keep watching the channel and don't forget to subscribe.